नाउ। यूट्यूब पर लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा कोई कंफर्म कर दो भाई मुझे चैट में एक बार। आई थिंक वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। हो गया, शुरू हो गया। गुड इवनिंग यूट्यूब की जनता। कैसी है हमारी यूट्यूब की जनता? लाइव हो रहा है, थैंक यू अमन। सो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं अपूर्व, अमन, हाय सोनम। सोनम ने एक छोटा सा ग्लिम्स दिया अपना, और जो है सोनम भाग गई कि मैं आऊंगी डिनर करके। हमारा डिनर टाइम चल रहा है, हमारे घर में गाजर का हलवा बना है, बढ़िया। अरे न्यू ईयर पे किस किस के घर में गाजर का हलवा बनता है? कंगना क्या कह रही है? रिजल्ट के बाद पता नहीं पार्टी मिले ना मिले। बिल्कुल सही बात है, मैं तो बोल ही रही हूँ भाई, रिजल्ट का कुछ नहीं पता, अभी कर लो न्यू ईयर पार्टी, है ना। हाय काजल, और लोग भी वीडियो ऑन कर ले। हाय राहुल। राहुल ये तो मतलब हमारे देखे हुए जो है लर्नर्स हैं हमारे। राहुल है, फरहान है, कृष्णा द्विवेदी है। हाँ जी, क्या हाल, क्या बात है, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। हेलो राहुल जी, क्या हाल है आपके, क्या है न्यू ईयर के प्लान्स, बता दो। अंकित, अंकित राज अगेन वन ऑफ आवर आईपीएम स्टूडेंट्स। लिखिता, वाह क्या बात है। ये लिखिता के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी मैं आपको। ये शी इज अ अमेजिंग ऑब्जर्वर। हाय शशांक। हेलो हेलो हेलो। चलो जी, आज के सेशन की शुरुआत करें। सेशन की शुरुआत करी जाए तो बोलिए, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन टुडेज लाइव सेशन। भाई यूट्यूब पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइक जो है बराबर आते रहने चाहिए, ठीक है ना। द लाइव रेशियो एंड द people who are liking the ratio, the people who are live versus the people liking the video, एकदम पैरेलल चलना चाहिए और ऊपर ही चलना चाहिए लाइक रेशियो थोड़ा सा। जूम मीटिंग वालों भाई यूट्यूब पर जाके लाइक दबा दो फटाफट से। जूम में लाइक करने का ऑप्शन नहीं है, जल्दी से चैनल ऐप खोल के, यूट्यूब ऐप खोल के लाइक आना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? चलो जी, बहुत बढ़िया, चैट्स पे चैट्स आए जा रही हैं। हाँ, फर्स्ट सेशन है दुर्गा का। हाय दुर्गा, आई होप आपका ये फर्स्ट सेशन जो है बहुत अमेजिंग बने, और हमारे साथ आप जो है आगे आने वाले सेशंस में जुड़ते ही चले जाएं। तो भाई आज के सेशन में हम मॉक इंटरव्यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मेरी प्रेजेंटेशन तो बहुत लंबी है, बट आई बिलीव हमें टाइम नहीं मिलेगा। आई विल ट्राई टू टेक मॉक इंटरव्यूज ऑफ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। उससे पहले मुझे ये बताइए चैट में जरा फटाफट से, किस किस ने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है आर्टिकलशिप, या फिर आई बिलीव बहुत सारे सीए फाइनलिस्ट या फिर क्वालिफाइड सीएस भी हमारे साथ जुड़े होंगे। सो हु ऑल हैव स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स और आर्टिकलशिप ऑलरेडी? प्लीज गिव मी अ cheer इन द चैट। बहुत बढ़िया भव्या। भव्या, तुमने तो अगर नहीं करा होता ना तो अभी डांट पड़ जाती तुम्हें, ठीक है ना। अच्छा, वेदांत हैजंट स्टार्टेड, वेरी गुड वेरी गुड। न्यू ईयर के बाद, अच्छा न्यू ईयर का वेट कर रहे हैं शगुन, हाँ। गुड इवनिंग अपूर्व फ्रॉम YouTube. I think Apoorv was part of my about to. Okay, Apoorv was part of my one of the GD batches, if I'm not wrong. है ना अपूर्व? बेहाल परेशान, अरे भाई क्यों परेशान, अभी सारी परेशानी दूर करेंगे। इंटरव्यू अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो है सेशन के थ्रू हम हेल्प करेंगे। आफ्टर रिजल्ट, भाई आफ्टर रिजल्ट ऐसा क्या हो जाएगा? आफ्टर 2 days आई विल अप्लाई। ये जो है पंडित जी ने नीतीश जी को जो है एक मुहूर्त निकाल के दिया है कि 2 दिन के बाद, हाँ हाँ नीतीश, कि पंडित जी ने बोला है 1:49 पर नीतीश आप अपना रिज्यूमे एचआर को भेज दीजिएगा पीडब्ल्यूसी में, और आपको जो है कृपा बरसेगी आपके ऊपर, हाँ चलो एनीवे, जोक्स असाइड, बट राहुल इतनी जल्दी थोड़ी ना रिस्पॉन्स आएगा अभी तो। मतलब आप अपने आप को टाइम दीजिए, 1 से 1.25 महीने या 1.5 महीना भी मैं तो बोलूंगी लग सकता है, अगर बड़ी फर्म्स का टारगेट कर रहे हो, टॉप फर्म्स का टारगेट कर रहे हो। मैं मजाक कर रही थी नीतीश हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रेज्यूमे अच्छे से अपडेट करना है, फिर ही अप्लाई करेंगे डेफिनेटली। राइट, सो
आई बिलीव अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अप्लाइंग, और काफी लोगों ने हमें बताया भी है चैट में. सो किसने इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी कर ली है, या फिर आज के सेशन की बात करेंगे, क्या सीन है उसका? इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि आपने कुछ रिसर्च तो करा होगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते होंगे. ये जो हमने अभी एक लाइव बैच करा था गाइज, इंटरव्यू एंड प्लेसमेंट मास्टर क्लास, और आपको जो है ना ये बहुत सारे चेहरे जो यहाँ पर दिख रहे हैं, स्पेशली जिनकी वीडियोज ऑन है, वो हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स जो है, लर्नर्स जो है इंटरव्यू प्लेसमेंट मास्टर क्लास के हैं. तो अगर मैं इनमें से किसी का इंटरव्यू लूं, मॉक इंटरव्यू लूं, तो जो आप उनको स्टैंडर्ड मत मान के चलना कि यार हमारा कंपटीशन तो बहुत हाई है, बिकॉज ये लोग जो है ना ये थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आए हैं, क्योंकि इनको हमने बहुत डांट लगाई है ड्यूरिंग द लाइव सेशन. तो इन लोगों से जो है जरा घबराए ना, इन लोगों को अपना ऑब्वियसली एक हेल्दी कॉम्पिटिशन ले कि भाई हाँ हमें भी इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है अपने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि कायदे से देखा जाए तो यही जो है यही पूल ऑफ कैंडिडेट सब अप्लाई करेगा अपकमिंग जॉब्स और आर्टिकलशिप के लिए. सो डेफिनेटली यू शुड बी एबल टू मैच दैट लेवल. हाँ जी मैम, कैन आई अप्लाई if I have prepared for November 22 of CA Inter? Yeah, definitely you can apply for sure. अभी तो जो है रिजल्ट आते ही एकदम से मतलब मास लेवल पे रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी बिग 4 में, टॉप फर्म्स में. मतलब आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट तो 12 महीने चलती है, इतने लोग जो है हायर होते हैं साल भर में. अभी हाल ही में कोई रिपोर्ट हुआ था, आई डोंट नो इफ यू गाइज रीड न्यूज और नॉट, बट इफ यू डोंट प्लीज रीड करना शुरू करो. 18 से 20 हजार लोग 18 से 20 हजार लोग बिग फोर्स टोटल एक ईयर में हायर करता है. मतलब दैट्स द एवरेज नंबर ऑफ पीपल दैट बिग फोर हायर्स इन एन एंटायर ईयर. ऑब्वियसली दिस इंक्लूड्स ग्रेजुएट्स, आर्टिकल्स एंड क्वालिफाइड एंड एनालिस्ट. तो टोटल जो है ये बता रही हो, ये तो सिर्फ बिग फोर का नंबर है, एंड देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस. तो जॉब की कमी है नहीं, पहली बात तो स्किल्स जो है आपके पास होने चाहिए. ठीक है, पार्टली प्रिपेयर है, सेशन के बात करेंगे, राइट? तो बिफोर द सेशन स्टार्ट्स, बिफोर आई गिव यू लिटिल बिट टिप्स अबाउट इंटरव्यू, तो मुझे पहले से बता दीजिए कौन पहले जाना चाहेगा मॉक इंटरव्यू के लिए. प्लीज रेज योर हैंड. कंगना, डू यू हैव अ डाउट? डू यू वांट मी टू म्यूट यू, अनम्यूट यू? नितिश जो है सबसे पहले जाना चाहेंगे. भव्य, तुम्हारा हाथ क्यों नहीं उठाए? हाँ, गुड, ठीक है. भव्य जाना चाहते हैं, राहुल जाना चाहते हैं, ध्रुवा जाना चाहते हैं. बहुत बढ़िया, ठीक है. नितिश आपको जाना है ना, मतलब आपने क्लैप कर दिया, आपने अपने लिए ही, मतलब नितिश इतना प्यारा है ना, नितिश ने अपने लिए, अपने आप को चीयर करने के लिए अपने आप ले क्लैप कर दिया. बहुत बढ़िया. तो गुड गुड गुड, ठीक है. तो भाई सबसे पहले जो है नितिश का आया था हैंड रेस, तो हम सबसे पहले नितिश को मौका देंगे, उसके बाद हम भव्य को मौका देंगे, फिर हम चलेंगे राहुल के बाद. ट्राई करेंगे कि हम एटलीस्ट 3 मॉक इंटरव्यूज लें. बाकी सबके लिए क्या है, क्या जो है उनको नॉलेज मिल सकती है. सबसे पहले आपको पता चलेगा किस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चंस, और किस तरीके से आंसर आपको करना है. जिनके मैं मॉक इंटरव्यूज लूंगी उन्हें मैं आफ्टर द इंटरव्यू आई विल गिव देम अ फीडबैक कि उनके आंसर्स में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है, करेक्ट, और किस तरीके से वो अपने आंसर्स को बेटर बना सकते हैं. एंड आई विल बी जजिंग यू ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स, द कॉन्फिडेंस यू आर displaying and your presentation skills, your communication skills, राइट? सो ज्यादा पैरामीटर्स पर मैं जज नहीं करने वाली हूँ, जस्ट लाइक 3 पैरामीटर्स: क्वालिटी ऑफ द आंसर्स, द कॉन्फिडेंस दैट यू आर कैरिंग, एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग एंड हाउ वेल यू आर आर्टिकुलेटिंग योर आंसर्स, राइट? सो ऑन दैट नोट, जस्ट क्विक, मतलब बस एक 10 मिनट का जो है हम एक सेशन अपनी प्रेजेंटेशन रन कर देती हूँ फॉर पीपल टू जस्ट ले द बैकग्राउंड कि भाई हाँ चलो जी अब शुरू कर लेते हैं. सो आई एम गोना शेयर माई स्क्रीन. मेरी स्क्रीन दिख रही है तो जरा चैट में बताते चलें. इज माई स्क्रीन विजिबल? चैट चैट चैट, यस यस यस. चलिए बहुत बढ़िया. चलिए जी, पर्सनल इंटरव्यू. सबसे पहले जो है आजकल जो है बहुत सारे इंटरव्यूज हमारे ऑनलाइन ही हो रहे हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ऑनलाइन इंटरव्यू में कैसे अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है उनकी बस क्विकली 5-10 मिनट्स में अपना एक टिप्स देख लेते हैं, राइट? सो दैट जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए तो आप अपने ये वाले जो टिप्स हैं, बेसिक टिप्स हैं, उनको अपने ध्यान में रखें, राइट? सबसे पहले आपको अपना होमवर्क करना है. होमवर्क ये क्या चीज है? हम कोई स्कूल जाते हुए बच्चे हैं क्या? हम कोई कॉलेज के स्टूडेंट है क्या हमें होमवर्क करना पड़ेगा? मैम हम ओवर कॉन्फिडेंट है, हमें कोई होमवर्क की जरूरत नहीं है. नो, डोंट डू दैट. ऑलवेज ऑलवेज डू योर होमवर्क. सबसे पहले आपको इंटरव्यूअर का प्रोफाइल चेक करना है. इंटरव्यू जिस ईमेल आईडी से आपको इंटरव्यू के लिए मीटिंग का लिंक आया है या फिर इंटरव्यू के लिए
आपको इनविटेशन आया है उनका, राइट, ट्राई टू फाइंड दैट पर्सन इन दी ऑन लिंक्डइन, राइट, एंड डू चेक कि सीसी में किसको मार्क किया है। जिनको यूजुअली सीसी में मार्क किया होता है वो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में अगर मैं बताऊं तो पहले आपका प्रॉपर एचआर राउंड होता था जिसमें सिर्फ पर्सनल क्वेश्चंस किए जाते थे आपके बारे में जानने से रिलेटेड, आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स, क्वालिफिकेशंस एक्सेट्रा। बट नाउ डेज जो ये वाला राउंड है वो यूजुअली टेलीफोन पे ही हो जाता है। तो टेलीफोनिक राउंड में ही दे ट्राई टू बिल्ड अ रैपो विद यू एंड दे आस्क ऑल दीज पर्सनल क्वेश्चंस एंड दे चेक द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू आर कैरिंग। एंड सेकंड इंटरव्यू जो हो जाता है, मतलब जो फर्स्ट फेस टू फेस इंटरव्यू बोल लो, थ्रू थ्रू जूम कॉल या फिर प्रीमाइसेस में बुलाकर, उसमें जो है दे डायरेक्टली स्टार्ट ऑफ विद द टेक्निकल वन। ठीक है, टुडे आई विल ट्राई टू मेक इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बट लार्जली मेरा जो फोकस है फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू पे रहेगा। ठीक है, रिवाइज योर रिज्यूमे। लोग अपना रिज्यूमे ही रिवाइज नहीं कर जाते हैं, मतलब चले गए हैं भाई ओवर कॉन्फिडेंस में इंटरव्यू देने, रिज्यूमे पे आप ही को ना पता है कि आपने कौन से कंपटीशन के बारे में लिखा हुआ है। कभी आपने 9th क्लास में तो भी कोई कंपटीशन अटेंड करा होगा जिसके बारे में आपने लिख दिया है क्योंकि रिज्यूमे बहुत पुराना था आपका, अपडेटेड, और आप जो है उनसे पूछ लिया। और मैं ये क्यों बता पा रही हूँ, क्योंकि ये सेम गलती मैंने करी है। मैंने लिखा हुआ था कि भाई मैंने 7th क्लास में एक जो है प्ले किया था और जो है उस प्ले में हमारा फर्स्ट रैंक आया था, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ था। तो मेरे से जो है इंटरव्यूअर ने पूछा कि ये कौन सा प्ले था, क्या रोल आपने प्ले किया था इसमें। मैंने बोला डैम इट, आई फॉरगॉट अबाउट इट, क्योंकि बहुत पुराना प्ले था, मुझे याद ही नहीं था मैंने क्या रोल प्ले किया था। सो डोंट डू दैट मिस्टेक, ऑलवेज रिवाइज योर रिज्यूमे, मेक श्योर दैट यू आर ओनली पुटिंग आउट द कंटेंट जिसके बारे में आप बोल सकते हैं। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस योर आंसर्स। और उसी प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर इस लाइव सेशन में इकट्ठे हुए हैं, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, अपने घर वालों को पकड़ लो, ये भाई बहन कब काम आएंगे, हाँ कब कमाएंगे ये लोग, इनको पकड़ के बोलो ये ले क्वेश्चन, उनको जो है लिस्ट दे दो क्वेश्चंस का, और जो है बोलो कि मेरे से इंटरव्यू जो है मॉक इंटरव्यू करो, राइट। मम्मी पापा भाई बहन दोस्त जो मिले सबको जो है अपने आंसर जो आपको बता देने हैं, सबको सुनाने हैं, अब सब इसी तरीके से जो आपका प्रैक्टिस होगा। देन लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू बेसिक थिंग्स। सबसे पहली बात, ऑनलाइन इंटरव्यू है तो ये वाली एप्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जूम के थ्रू होगा या फिर गूगल मीट के थ्रू होगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू होगा। यूजुअली कॉर्पोरेट्स में जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होती हैं वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्रेफर करती हैं। देन सेकंड प्रेफरेंस इज गूगल मीट। जो मिड साइज फर्म है या फिर टॉप 10 फर्म्स में भी उसमें जूम जो है प्रेफर किया जाता है, राइट। सो आपको ये तीनों ही इंस्टॉल करनी है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू, ये नहीं है कि भाई जब इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है तभी आप अपना माइक टेस्ट कर रहे हो, तभी आप अपनी वीडियो की क्वालिटी टेस्ट कर रहे हो। ये ऐप्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने सॉफ्टवेयर में अपने फ्रेंड के साथ, अपने सिबलिंग के साथ जो है टेस्ट रन करके देख लो कि आपका माइक, आपकी आवाज प्रॉपर जा रही है कि नहीं जा रही है, आपका वीडियो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। जस्ट बेसिक थिंग्स। लॉग इन बिफोर टाइम, राइट। जब आपका इंटरव्यू अगर 2 PM का शेड्यूल है या 2:15 का शेड्यूल है तो ट्राई टू लॉग इन एट 2 और 1:45 PM। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। कई बार हम फोन का हॉटस्पॉट यूज करके अपना इंटरव्यू अटेंड कर रहे होते हैं, अनलेस आपके घर में बहुत अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी है, ठीक है, तो ही प्रेफर करना, अदरवाइज गो फॉर वाईफाई कनेक्शन। ठीक है, आजकल वाईफाई तो एक मतलब नेसेसिटी हो गई है। वो बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान के बाद वाईफाई जो है जो चाहिए हर किसी को। ठीक है ना, वाईफाई इंटरनेट के बिना आजकल कुछ भी नहीं है लाइफ में। अगर वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आई वुड से कि अगर पास में ही कोई इंटरनेट कैफे है तो वहां जाकर आप अपना इंटरव्यू दें और कुछ सेटिंग बना ले भैया के साथ कि भैया मेरा इंटरव्यू है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, शोर वोर मत करिएगा। ठीक है, सो बट डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, कीप अ वाटर बॉटल विद यू। दो जो है पर्पस यूज होंगे, बट ओवर डू भी मत कर देना कि बीच में जो है वॉशरूम जाने पड़े कि भाई मेरे को वॉशरूम जाना है। ठीक है, इतना भी मत पी लेना। सो कीप अ वाटर बॉटल। वन, डेफिनेटली पानी जब आप पीते हैं तो फ्लो ऑफ थॉट्स बेटर रहता है। ठीक है, एंड दूसरा, कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ ले जिसमें आपको सोचने का टाइम चाहिए तो आप उसमें जो थोड़ी एक्टिंग कर सकते हो पानी पीने की। ठीक है, और जो आप उनको बोल सकते हो कि भाई हाँ, मतलब देन यू कैन मीनवाइल यू कैन थिंक ऑफ द आंसर एंड देन आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर यू कैन सी। ठीक है, देन यूज द रेस्ट रूम बिफोर द इंटरव्यू। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला, ज्यादा पानी मत पी लेना, या फिर इंटरव्यू से जो है यूजुअली नर्वसनेस में जो है क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर भी ज्यादा लग जाता है। सो प्लीज मेक श्योर कि अपने ये सारी बेसिक चीजें ना ये पहले निपटा कर चले। वियरिंग फॉर्मल्स ब्लूपर है, ये वीडियो हमारे जो आईपीएम के लर्नर्स हैं उन्होंने देखी हुई है, बट फॉर्मल्स में जो है आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है फॉर्मल पहनने में। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, पहले ये बताओ। ठीक है,
So sorry about that, guys. Thank you. Quarantine. So you both received the agreement, correct? That's correct. Okay. So I'm so sorry. Let me just lock the door, please. Just hold. No problem. Nice shorts. Nice shorts, Josiah. Oh. Oh my goodness, I'm so sorry. This is embarrassing. Please forgive me. It's no problem, Josiah. No problem at all. Oh, So कहने की बात ये है कि फॉर्मल्स अगर पहन रहे हो तो नीचे शॉर्ट्स नहीं पहनने हैं. पता चले किसी कारणवश आपको खड़ा होना पड़ गया ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो जो है ये नहीं होना चाहिए. इसी में से ही एक अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए. या तो आप प्लेन दीवार रख लें या फिर बेसिकली दरवाजा ना हो. अगर दरवाजा है तो आप उसको लॉक करके रखें. ठीक है, एक और वीडियो देखते हैं कि कैसे जो है मीटिंग गॉन रॉन्ग. And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. My apologies. सो बैकग्राउंड जो है आपको अपना प्लेन रखना है, दरवाजा नहीं रखना है. और दरवाजा अगर रखा हुआ है तो प्लीज मेक श्योर कि ऐसे बच्चे या फिर घर वाले, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स वगैरह पीछे से आकर जो है इंटरव्यू में आपको परेशान ना करें. ठीक है. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? राइट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम कॉन्फिडेंस आपको जो है एग्जीक्यूट करना है. ठीक है. नर्वस तो ऑब्वियसली होंगे ही आप. आई एम नॉट सेइंग कि भाई नर्वस बिल्कुल भी मत होना. आपका हो सकता है शायद लाइफ का पहला इंटरव्यू हो तो नर्वसनेस तो पूरा होगा, बट प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे. और ये मान के चले कि भाई ज्यादा क्या होगा, नहीं सिलेक्ट होगा ना तो क्या हो गया, बहुत सारी कंपनीज और पड़ी, बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है. सो बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस. जब तक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप इंटरव्यूअर के सामने भी अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. ऑलराइट. एंड देन यस, स्माइल. राइट. ये तो जो बहुत बेसिक सी चीज है, बट एकदम ऐसे ग्रम्पी होके मत देना इंटरव्यू कि भाई, मतलब इंटरव्यूअर को बोलोगे कि भाई तो इंटरव्यू के बाद बाहर मिली हो, तूने मेरे से ऐसे सवाल क्यों पूछ लिया. हाँ. So don't be grumpy, smile and be very cheerful, because you know people wearing smile all the time and people who have this vibrant energy, they are more likable. And during the interview you have to make sure that the interviewer likes you. And how will you do that? By passing on this positive vibe and energy. Right. So common interview questions जो कि अब हम शुरू करेंगे अपने मॉक इंटरव्यू के दौरान. So, Nitish, are you here? Nitish, are you here? Shall we go for the interview? I can't see Nitish मैम अभी फॉर्मल कपड़े ने. अरे कोई बात नहीं नितिश, वीडियो ऑन कर लो, आ जाओ. कोई बात नहीं. वो बेचारा कॉन्शियस हो गया कि मैम अभी फॉर्मल पहनना पड़ेगा क्या. कोई बात नहीं, अभी चलेगा, बिना फॉर्मल के भी चलेगा. नितिश प्लीज वीडियो ऑन करिए. हाय ज्योतिका, अभी देखा मैंने आप आ गए हो. मैम अनम्यूट करना होगा, पर मुझे दिखो तो सही, मुझे वीडियो नहीं दिख रहा आपका. वीडियो तो ऑन करो नितिश, तभी तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगी. अच्छा, मैं अनम्यूट करना अलाउ कर देती हूँ. अब आप जो है अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. यस. हाँ जी. Yes, नितिश, क्या हाल है? good evening, ma'am. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो करें स्टार्ट इंटरव्यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो. अच्छा, कौन सी कंपनी आपकी ड्रीम कंपनी है, बताओ भाई. कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देना चाह रहे हो? कोई भी टॉप एक नाम डिसाइड कर लो, आसानी होएगी अपने को. डेलॉइट और डेलॉइट में. ठीक है, ठीक है, ठीक है. जस्ट अ सेकंड, आई विल ब्रिंग माय नोटबुक. हाँ, जस्ट अ सेकंड. हाँ जी, सब फीडबैक लिखना होगा ना. तो माय मैम ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा ना? yeah, this will be available on YouTube.
तो मैं इसके यही रेकमेंड भी करती हूँ कि आफ्टर आफ्टर योर इंटरव्यू, आफ्टर योर मॉक इंटरव्यू, यू शुड गो एंड रीवॉच इट, ताकि आपको पता चले आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करी हैं। ठीक है। Yes, तो ma'am. भाई हमारे साथ है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जाना चाहते हैं स्टार्ट ऑडिट, टैक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग, एमएनए, एफडीडी, कौन सी Stat प्रोफाइल? audit. स्टार्ट ऑडिट। नीतीश जो है जाना चाहते हैं स्टार्ट ऑडिट की प्रोफाइल में, और वो जाना चाहते हैं डिलॉयट, जिसमें जो है हायरिंग मतलब बड़ी ही सोच समझ कर की जाती है और इतनी वैकेंसीज भी नहीं निकलती हैं, तो काफी प्रिविलेज्ड बिग फोर है, राइट? सो यस नीतीश, Yes, लेट्स ma'am. स्टार्ट। हाय नीतीश, वेलकम। हाउ आर यू डूइंग टुडे? I'm doing good, ma'am. Right. Let's start with your introduction. My name is Nitish, as you have said right now. Um, I come from Godda district of Jharkhand. I am currently pursuing my graduation from Indira Gandhi National Open University, and I have recently appeared for November 22 attempt of CA intermediate exam. Some of my keen interest lies on playing cricket and doing yoga and meditation. Okay. Uh, how long have you been doing meditation? I've been doing it from since when I was in 12th standard. I started doing doing meditation. I got the knowledge of meditation a lot earlier because in childhood days my mom used to do it. I used to watch her daily, but as a children I was involved in playing and much more in extracurricular activities. So after and at 12, when I was in 12, I realized what is the importance of meditation in our daily life, and as it helps us to be calm in the pressurized situations. As I also played cricket, so it helped me a lot in my academics as well as in my other activities also. That's wonderful. How many types of meditation are there? If you could enlighten me on that. Um, the meditation that I do is Vipassana, and there are also different types of meditation like watching the breathing exercise, watching the breaths in and out, and the second type of meditation that itself in the Vipassana is that watching your thoughts. This is the second, and the third one is basically I do Vipassana, and I don't know much about the different type of meditation. I also know a bit about Vivekananda's meditation that he used to say. Actually, he told to focus on your breathing, but I did not personally follow that because that didn't help me a lot. But Vipassana does that one for me. Awesome. Um, okay. So why do you want to work in the statutory audit department, Nitish? Actually, when I was in foundation, I did not get I did not knew that what this CA field actually is about. But when I come to intermediate, I got used to with so many of subjects, and I loved the audit subject. So I want to get exposure in this field. Okay. Why did you choose CA in the first place? Uh, Actually, ma'am, there is a long story behind this. Um, when I was in 12th, I was from a science background, but as you know that every Indian parent has a pressure of selecting the science stream, and I have selected that one also in the pressure of my parents. But later on, I examined myself, and I deep dived into my thoughts, and just asked myself that what I want to do really in life. So this field attracted me a lot, and the job opportunities in these fields are also are also so diverse and great. But in science, it is not that much of diversity of job. So I like this field a lot.
but people in IT are doing great. There are so many job opportunities available there, and I mean, in the initial pay packages of especially people coming from CS background, they're, I mean, immensely higher. Yes, ma'am, you are right that they are actually getting a high pays, but the high paying jobs are available who are graduated from IIT of IIT universities. So, but I do not see myself that much of I do not have that much of capability to get into IITs. So that was a major reason that I did not choose science field for my future. You're talking about capabilities. What do you think makes you capable for this field? Because this is Um, also an equally challenging field, right? And chartered accountancy is also one of the, highly reputed professions in India. Then and it's comparatively tough also. So what makes you capable to go ahead and choose this profession, which is equally hard? Actually, when I was coming into this field, my friends told me that I also thought that I do not have much of the intellectual knowledge, but my friends told that in CA course you have to do a lot of hard work that I can do. Um, and because of this, I thought that I should give it a try, and I cleared my foundation in my first attempt. So that gave me a push to appear for the intermediate, and that's why I am now. It has now I am feeling it better to be in this field. So I think that this is the reason that I am. I think I am capable. Nitish, as you know, our company is one of the most reputed companies in this particular domain, especially for start audit. And I have received approx hundreds of applications for this particular job position. What makes you different? Why should we hire you? I have received so many people who have the same amount of capabilities. What makes you different than them, and why should we hire you? Actually, ma'am, I think that I have that much of skills and knowledge to get into this branded firm, and I think the hard work needed to work in this Deloitte firm is in me, and I can do that very easily. I am a multitasker. I can i can do lots of work in at a time. I know how to manage my work life and my personal life in a better manner. As I have mentioned that I played cricket also during my 12th, and I managed my academics as well as my sports journey also. So I think that I can manage my workload on me. So this makes me a good candidate, but I don't think so that everyone is perfect. I might be having some weaknesses, and if I have some weaknesses, then I will definitely work on that to improve it. Hmm. That's wonderful. Do you have any questions for me? No, I'm not right now. All right. Thank you so much. It was nice talking to you. All the best. Thank you, ma'am. भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए पहली बात तो नितिश के लिए, इतने कॉन्फिडेंटली उन्होंने जो है सारे क्वेश्चंस को टैकल करा। और मैंने बीच में कोशिश करा कि मैं इंटिमिडेट करूं नितिश को थोड़ा, बट ही टुक इट वेरी वेल। बहुत बढ़िया नितिश, जोरदार तालियां होनी चाहिए। यूट्यूब, जूम चैट, हर जगह तालियां ही दिखनी चाहिए मुझे। वेरी गुड जॉब नितिश, वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, मैम। बहुत बढ़िया। बट यहाँ आता है बट, अब आएगी डांट, ठीक है ना? अभी बताती हूँ मैं कहाँ कहाँ डांट पड़ेगी तुम्हारी। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आईपीएम के स्टूडेंट हो ना? यस मैम। हाँ, अब तो डबल डांट लगेगी, बी रेडी। हाँ चलो, इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था, इंट्रोडक्शन अब बोलेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन तो ठीक था, क्या कमी लगी इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन में कमी नहीं थी, बट आई बिलीव इट कैन बी बेटर।
स्टार्टिंग आपने ठीक करा, वेयर डू यू कम फ्रॉम, फिर आपने बताया कि आप क्या लेवल है अभी, ग्रेजुएशन का क्या लेवल है, एग्जाम्स का क्या लेवल है, दैट वाज ऑल फाइन. यू कुड हैव टॉक्ड अ लिटिल बिट अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, जो कि हम बोलते हैं, राइट? जैसे हम बोलते हैं आप अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करिए. अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन यू कैन talk about your exam qualification etc, then talk about your family background and then talk about your hobbies. तो आप बस एक फैमिली बैकग्राउंड वाला जो है एक छोटा सा ऐड कर सकते हैं, राइट? यू कैन टॉक, इट्स ओके, लाइक आप बोलेंगे नहीं यार फैमिली बैकग्राउंड इतना कोई बहुत बढ़िया नहीं, अरे बी कॉन्फिडेंट, बी प्राउड अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, बी प्राउड अबाउट योर अकम्पलिशमेंट्स दैट यू हैव अचीव्ड सो फार, ठीक है ना? तो एक वो आप ऐड कर सकते थे. एंड वो मुझे अच्छा लगा कि आपने योगा और मेडिटेशन का पॉइंट वहां पर इंक्लूड करा जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट थे. तभी मैंने योगा और मेडिटेशन का पॉइंट भी जो है क्वेश्चन मैंने पूछे, मैंने इसीलिए पूछा, आई जस्ट वांटेड टू चेक कि नितिश यहाँ पर ब्लफ कर रहे हैं कि इनको एक्चुअली में नॉलेज भी है योगा मेडिटेशन का, नहीं. तभी मैंने बोला. एंड गुड जॉब डन देयर, आपने काफी अच्छे से उस क्वेश्चन को टैकल करा. एंड दिस इज व्हाट ड्राइविंग योर इंटरव्यू इज कॉल्ड. तो आपको बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड कर देने हैं, आपको अपने आंसर्स इस तरीके से सर्व करने हैं कि आपके आंसर्स में से ही आपका इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपसे, राइट? स्टैट ऑडिट वाला मुझे क्वेश्चन इनकम्प्लीट लगा थोड़ा सा. आई बिलीव यू कुड हैव शोन अ लिटिल मोर एंथुजियाज्म इन द स्टैट ऑडिट प्रोफाइल, ठीक है? अभी वो कैसे आंसर करना है अभी हम बात करेंगे उसके बारे में. YCA वाला सबसे ज्यादा डांट मैं लगाऊंगी आपके, एक तो YCA वाले में, एक तो जहां आपने मेंशन करा कि मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है साइंस वाले में, वो वाला, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था. एंड लास्ट में जो है एक आपने वहां पे एनी क्वेश्चंस जब मैंने पूछा तो आपने बोला कोई क्वेश्चंस नहीं है. ये 3 जगह पर है जहां पर मैं सबसे ज्यादा आपकी डांट लगाऊंगी. कितनी बार बोला गया था कि अगर आप मतलब किसी दूसरे प्रोफेशन को, किसी दूसरे एग्जाम को कभी भी बैश नहीं करना है. बैश करने का मतलब बुराई नहीं करनी है, ठीक है? अरे होगा साइंस बुरा, हमें क्या पता, हम तो वैसे भी, हम तो कॉमर्स वाले, हम तो वैसे भी साइंस की बुराई करेंगे, राइट? होगा भाई, बुरा होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन हमें इंटरव्यूअर के सामने नहीं बोलना है. क्या पता इंटरव्यूअर खुद साइंस बैकग्राउंड का और उसे खुद बहुत अच्छा लगता हो साइंस, राइट? राइट? सो नेवर नेवर बैश. अगर स्टैट ऑडिट में गए हो, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि भाई स्टैट ऑडिट क्यों, इंटरनल ऑडिट क्यों नहीं जा रहे हो, तो आप तो फिर वहां पर ये कर देते कि इंटरनल ऑडिट में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, स्टैट ऑडिट में बहुत प्रोफाइल, बहुत वैकेंसीज होता है ना? वो नहीं करना है. आप बोल सकते थे कि भाई मेरा जो है इंटरेस्ट इस तरीके से डेवलप हुआ, जो आपने वो स्टोरी बिल्डअप किया ना कि भाई मेरे को जो है पहले मैंने साइंस से था, देन मेरा स्विच हुआ. आप थोड़ा सा वहां पर कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकते हो कि हाउ यू गॉट इंट्रोड्यूस टू द this course chartered accountancy, ठीक है? आप ऐसे बोल सकते थे, you know, I got to know about this course like through a friend of mine, and he was just, you know, one day he was just talking about how this course is so tough and it's so reputed in our country and the amount of respect that one get. And you know, randomly I tried to research a little more about the course, and I got to know that it's such an amazing course. And since my childhood, I've always been fascinated by numbers, etc. Numbers always excited me, and I wanted to try out and you know, I enrolled myself, and I got to know that even if you come from a science background, you can get enrolled. And I tried out. I cleared CA Foundation, and when I was introduced with the subjects of this particular course, I was you know, impressed how one gets to learn about business models, how one gets to learn about numbers, and accounting is such a fascinating field or such a fascinating subject. It's one of my favorite subjects. Just add a little more story, ठीक है? जस्टिफाई करो आपने स्विच क्यों करा. आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, क्योंकि साइंस में 2 साल आपने लगाए हैं, 2 से 3 साल आपने वहां पर इन्वेस्ट करे हैं, तो कॉमर्स में स्विच होना शुड बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, ठीक है? जस्टिफाई दैट. वो वाली चीज, नो कैपेबिलिटी, मेरे मतलब मैंने तो पूछा ही नहीं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, मुझे नितिश ने पहले ही बता दी मेरी वीकनेस तो ये है मैडम जी. नो, डू नॉट फीड मी नेगेटिव आंसर, ठीक है? नेवर डू दैट. जब तक, और अगर मैंने तो आपको बताया था ना, वीकनेस भी अगर हम बता रहे हैं तो हमें बड़ा डिप्लोमेटिकली बतानी है. मैम मैं ना बड़ा वर्कोहॉलिक हूं, मैं खाना खाना भूल जाता हूँ, मेरी तो वीकनेस ये है. दिस इज अ डिप्लोमेटिक आंसर, ठीक है? मैम मैं बहुत ज्यादा फोकस से काम करता हूँ, मेरे को टाइम का अंदाजा ही नहीं रहता है, मेरी हेल्थ अफेक्ट हो जाती है. या फिर मतलब मैं जो है सारे प्रोज, और मैं कभी कभी जो है बहुत ज्यादा एनालिसिस कर लेता हूँ जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में टाइम हो जाता है. You know, that's showing that you're a thorough individual. You
take everything into consideration and then you make a decision, right? So हमें अपने negatives भी कुछ positive तरीके से बताना है कि उसको लगे positive है. या फिर दूसरी अप्रोच ये रख लीजिए कि आप कोई अपनी वीकनेस के बारे में बताइए और आप ये बता दीजिए कि मैंने कैसे इसको ओवरकम करा है. ठीक है, जैसे हमने सेशन के दौरान बात भी करा था कि आप बता दो कि पहले जो है मुझे नए लोगों से मिलने में थोड़ा डर लगता था. आई वॉज लाइक अ वेरी शाई पर्सन. And then I realized that I need to change this in myself. Then I joined, this IPM class where I got to talk to new people, hundreds of new people, and I made friends. And I gave this myself. I gave this challenge to myself that I have to meet a new person every week and I have to go and talk to them. ठीक है, तो बस अपना ऐसे बताओ कि मैंने अपनी वीकनेस को कैसे ओवरकम किया. ऑलराइट. एंड देन लास्ट में एनी क्वेश्चंस अगर कभी आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है, कभी भी ये नहीं बोलना कि मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है. इससे लगता है कि आप में इंटरेस्ट नहीं है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है टू नो अबाउट द प्रोफाइल, टू नो अबाउट द इंटरव्यूअर. ठीक है, तभी मैं बोलती हूँ रिसर्च करके जाओ इंटरव्यूअर पे, ताकि आप उसकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. राइट, द इंटरव्यूअर विल बी इमीडिएटली इम्प्रेस्ड, ट्रस्ट मी. ठीक है, आप उनकी वर्क एक्सपीरियंस की हिस्ट्री देखकर जाइए. अगर उन्होंने लिंक्डइन पे कोई पोस्ट डाला हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लीजिए, या फिर उनके वर्क एक्सपीरियंस की हिस्ट्री में से कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए. या फिर और कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप जिस जॉब पोजीशन के लिए आपने अप्लाई करा है, हाउ विल अ नॉर्मल डे लुक लाइक फॉर एन आर्टिकल असिस्टेंट इन स्टार्ट ऑडिट प्रोफाइल, आस्क दिस क्वेश्चन. ठीक है, या फिर व्हाट विल बी द करियर ट्रैजेक्टरी. मतलब वैसे तो आपको पता ही है कि भाई फर्स्ट या सेकंड या थर्ड है, बट like what will be the growth prospect in this particular position, how will I get to learn from the team members, right? How many projects can one handle at one point of time? What all things one can do to grow more and more in this particular domain, right? So ye sari cheezein, always ask question to show that you are a very curious person and you're highly interested in this profile, right? Still good job Nitish, but improvement तो definitely करना ही है. ठीक है ना? एक्चुअली फर्स्ट इंटरव्यू था तो थोड़ा सा नर्वसनेस के कारण बहुत अच्छा किया आपने, पर मेरा तो हक है ना डांटने का. नहीं, वो तो मैं चाहता हूँ कि कोई डांटे से इम्प्रूवमेंट आएगा. और मैं लास्ट में एक क्वेश्चन था कि आपसे मतलब पूछना क्या, एक्चुअली वहां पे पूछना था, बट मुझे लगा कि आपसे क्या पूछूं अभी, क्योंकि मैं आपके बारे में तो अभी मैंने कुछ ज्यादा रिसर्च किया नहीं है. और मीन्स लिंक्डइन पे भी आपका कनेक्शन है नहीं मेरा, तो मैंने मतलब एक्चुअली मैंने रिक्वेस्ट भेजा है कनेक्शन के लिए, बट वो मतलब कनेक्शन अभी वो हुआ नहीं अभी, तो इसलिए मुझे कुछ मिला ही नहीं पूछने के लिए, तो इसलिए नहीं पूछा, बट मैं पूछने वाला था कुछ. कोई नहीं, तभी मैंने बोला ना कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपके पास, आप स्टार्ट ऑडिट में जा रहे हो, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके दिमाग में पहले से ही होने चाहिए. ठीक है ना? आई नो हम रोल पे कर रहे हैं, बट स्टिल. जैसे मैम आपने बोला कि रिक्रूटर्स के प्रोफाइल्स को थोड़ा सा रिसर्च करके जाओ, उनके लास्ट प्रोजेक्ट्स को, बट वो लोग क्या डालते हैं कि अपना लास्ट प्रोजेक्ट की कहाँ पे उन लोगों ने किया? प्रोजेक्ट नहीं डालते, बट अपना वर्क एक्सपीरियंस डालते हैं. वर्क एक्सपीरियंस में समरी वगैरह, थोड़े न्यूज आर्टिकल्स पढ़ लो. उनकी एक्टिविटीज को भी देख के उसके बारे में पूछ सकते हैं कि इस एक्टिविटीज में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा. हाँ, मतलब वर्क एक्सपीरियंस, एक्टिविटी नहीं, ऐसा लगेगा स्टॉक कर आए हो, बट एक्सपीरियंस से रिलेटेड पूछ सकते हो. या फिर जैसे अगर कोई बहुत मतलब ऐसी पर्सनालिटी है जो न्यूज वगैरह में आ चुकी है, तो मतलब उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चंस पूछना. बट अदर देन दैट उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है जरूर गो थ्रू करके जाएं, और बस उनके वर्क एक्सपीरियंस में देख लीजिए कि उन्होंने कैसे कैसे अपने करियर में ग्रोथ करा है. राइट, एंड डेफिनेटली जो इंटरव्यूअर होंगे वो डायरेक्टर लेवल पे होंगे या मैनेजर लेवल पे होंगे, तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा. ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं. यस मैम. ठीक है, नहीं तो आप ये पूछ सकते हैं कि मतलब कि लाइक व्हाट डज इट फील लाइक टू बी दिस पर्सन. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल शशांक इज द इंटरव्यू, व्हाट डज इट फील लाइक टू बी शशांक. लाइक बहुत ही ऐसे अब्सर्ड क्वेश्चन है, बट द इंटरव्यू विल बी लाइक भाई ये क्या पूछ लिया. ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट पूछना. जैसे मैंने तो शशांक का नाम ले लिया, बट लाइक आप पूछ सकते हो व्हाट डज अ नॉर्मल डे लुक लाइक फॉर अ एनर्जेटिक डायरेक्टर ऑफ दिस ह्यूज कंपनी. ऐसे करके आप पूछ सकते हो. ऑलराइट, चलें आगे भव्य की तरफ. भव्या को जिटर्स हो रहे हैं कि मेरा चांस आ गया.
चलो, YouTube की जनता क्या हाल है? या YouTube पे भी बहुत तारीफ हो रही है। सिलेक्टेड है भाई, हमारा लड़का सिलेक्टेड है, डोंट वरी। चलो, भव्या को अनम्यूट करते हैं। हाय Good आर्यन, evening, विल कम ma'am. टू यू। भव्या ने बहुत पहले रेज कर दिया था अपना हैंड, ठीक है, सो विल कम टू यू। ऑलराइट। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग भव्या, क्या हाल है जी? All good, ma'am. चलिए, कौन सी कंपनी में जाना चाहेंगे आप, बताइए। EY, EY, फुल फॉर्म बताना EY की। Ernst and Young. KPMG की बताना। KPMG की तो बहुत मुश्किल है, मैम. उसकी और बहुत पूछ लिया मुश्किल है. इंटरव्यू ने KPMG वाले ने तो। अगर KPMG में गए तो याद करके जाऊंगा ना. हाँ, किसी को पता है वैसे KPMG की फुल फॉर्म? 100 रुपए पेटीएम प्राइस, बताओ। चलो, गूगल नहीं करने का है, इमीडिएटली बताने का है। नहीं पता, वेरी वेरी बैड। ये हमारे CA वाले हैं, ये देखिए। जाना है इनको बिग फोर में, KPMG का फुल फॉर्म नहीं पता है। क्लेनवेल पीट मार्विक, समथिंग लाइक दिस, या मार्विक गोडलर, या मार्विक गोडलर। मैंने तो वो रटी थी तब के टाइम अपने तब से मुझे याद है। यस, क्लेनवेल पीट मार्विक गोडलर। ये इसने मैम गूगल से कॉपी करा है. हाँ हाँ, वो तो पता है रजत मुझे। जैन ने. वरना इतनी परफेक्ट स्पेलिंग। Yes, ma'am. और कैपिटल भी है बीच में. हाँ, चलो। सो भव्या को जाना ही EY में। कौन से डोमेन में जाना चाहेंगे भव्या आप? Chat audit. स्टैट ऑडिट, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। Yes, ma'am. स्पीकर भी ऑन कर देती हूँ मैं। हाय भव्या, हाउ आर यू डूइंग टुडे? All good, ma'am. लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। Myself, Bhavya Taneja. I am born and brought up in New Delhi. I have recently appeared for my C intermediate examinations in November 22, for which the results are being awaited. I cleared my CA foundation in one go with a distinction in December 21 attempt. Also, I am pursuing my graduation in Bachelor's of Commerce from Delhi University School of Open Learning. And apart from my academics, I like to play chess and Sudoku. Also, for outdoor games, I like to play badminton. Talking about my family background, my father is a businessman and he is into the business of printing cards. My mother is a housemaker, and my two sisters, they both are married. That's nice. You talked about badminton. Yes, ma'am. Can you tell me about 3 fouls of badminton game? If we serve upon another person and the shuttle does not cross the net, then it is a foul. Also, if we take a shot and it goes beyond a particular range, then also it is a foul. Also, there is a rule of odd even in badminton for serving. Let's say I am serving, then I have to first serve from odd side, and next time I have to serve from even side. So if I mix it up, then also it is a foul for serving. That's wonderful. Do you play often? I used to play often, but after coronavirus hit, my play has been limited. But I used to play often with my friends. Right. What is a stalemate in chess? A stalemate in chess is a position when the opponent is not in check and also he has no legal moves in chess. Then the game ends up in a draw. That's nice. So there are so many courses out there. Why did you choose commerce? I chose commerce because I had my love for numbers from my 6th class onwards. I like to play with numbers a lot. Also, I love to analyze about different companies. I would love to know how they work in real life and also how their financial statements are prepared, which I am learning in chartered accountancy course right now. That's amazing. What was the last company you analyzed, since you love analyzing companies so much? The last company I analyzed was Infosys. Okay, what are your observations? So my observations are that their market price is currently at not at very good point right now,
their price was boomed during coronavirus, and now since people are now coming to normal life, its share price has fell down by approximately 20% since last 2 years. It was Who's the 19 founder of Infosys? founder of Infosys. Sorry, ma'am, I don't know. I am not aware about that. Okay. So, why do you want to work for EY? I want to work with EY because since it has such a reputed name in the industry, it is renowned globally. Also, it is one of the big fours, which is a dream company any for any commerce background student out there. Also, the clients of EY are globally renowned as well. So I think I would be able to upgrade my skills a lot by working with EY. But we have limited vacancies, Bhavya, and I have received almost 500 applications for the limited vacancies that we have. Why Yes, should ma'am. we hire you? What makes you different than others who have applied for the same position? Since most of the CA intermediate students who are waiting for their results, they usually waste their time and tend to rest in between the period. I decided to upgrade my skills by doing various certified courses from Thinking Bridge. Also, I have done a audit masterclass to know how the work is practically done in the field of stat audit. What is Thinking Bridge? Thinking Bridge is a platform found by Big Four alumni in which we are provided with certified courses on various domains to help us know in which field we have our major interest lies. Could you tell me a little more about what all did you learn in this audit masterclass that you say? So since we learn our audit subject in group 2 theoretically, but we tend to miss out on the practical aspects of auditing, such as various controls, substantive testing procedures, how the work paper documentation is actually done in the real world, which we have to do in this job as well. So I learned various things about that. Hmm. Right. Can you tell me a little bit about your strengths and weaknesses? So my strength is I love to work towards my technical skills. I like to upgrade my skills at various intervals. Also, I am very hardworking individual. I believe in teamwork. Also, if also whenever I receive an opportunity to lead a team as a team leader, I I open-heartedly accept that opportunity to present the work in a efficient and timely manner. When was the last time you got a chance to be leader and showcase your leadership skills? So recently, I enrolled in my ITT batch, which is a mandatory training by ICAI. Then we were presented with a group project on Microsoft Word. In that, we had to select a coordinator and a group leader. I was selected as one, and we successfully presented our presentation in front of more than 50 students. Are you familiar with MS Excel? Yes, I am very much familiar with MS Excel. I have worked on MS Excel practically in audit masterclass as well. Could you tell me how to use pivot table? We use pivot table. Firstly, we have to select the data on which we want to work. Then we use pivot table to summarize the data in a manner in which we want. So let's say there are 20 columns in our data and we want only the summary of let's say about 3 columns. Then we can use pivot tables to create a meaningful output for our further analyzation. Can you tell me a little more about balance sheet assertions? Yeah, so balance sheet assertions, there are 4 balance sheet assertions: existence, rights and obligations, completeness, and valuation. Tell me a little more about valuations. In valuation, we tend to make sure that the amount that appears in the books of accounts, that is balance sheet, is accurate and as per the market value. Let's say there is a asset car of about 50 lakhs in our books of accounts. So we have to make sure that the value of the car is actually 50 lakhs
after deducting all the depreciation as per accounting standards. That's wonderful. That's all from my side, Bhavya. Thank you so much for your time. Do you have any questions for me? Yes, ma'am. So, like you are working in this statutory domain for more than 15 years. Could you share with me any big obstacle which you faced during your career? Yeah, so at times it's hard to, manage with clients because, like clients, they try to cover up things and they do not provide data on time. So that becomes a really big hassle, especially with new clients and especially with clients who have something fishy on their financial statements. But other than that, the journey is rather smooth, but obviously every profile, every job, everything that we do has its own challenges. So with time, I think when you'll gain experience, you get a hang of how to deal with people. So that can be learned. Definitely. Thank you ma'am. so much. बहुत ही ज्यादा बढ़िया भाई, भव्या के लिए जोरदार तालियां हो जाए चैट में। कैसा लगा इंटरव्यू? पहली बात तो भव्या सिलेक्टेड, सिलेक्शन 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 सिलेक्शन, पर्ची कट जानी चाहिए सिलेक्शन की। यूट्यूब कैसा लगा भाई हमारा मॉक इंटरव्यू भव्या का? बहुत ही बढ़िया। सेम फीडबैक एज एवरीवन। भव्या बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, एवरीथिंग टू द पॉइंट। मतलब भव्या मेहनत कर रहा है भाई, आईपीएम के बाद साफ दिख रहा है भव्या के कॉन्फिडेंस में, भव्या के आंसर्स में, दैट भव्या इज मतलब diligently working on preparing his answers and actually practicing them also. So good job भव्या। मतलब मेरे पास कोई, मैं सोच रही थी अब गलत, अब कमी निकालूं, but I couldn't really find. हाँ, and I think you were nervous, which is fine, but वो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे वो नर्वसनेस भी चला जाएगा आपका। यू आर स्पीकिंग विद, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू पूरा लेकर, पूरा बात करके। मुझे ऐसा लगा ही नहीं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, वेरी गुड। मतलब यूट्यूब ने भी जो है आपको बोल दिया है भव्या सिलेक्टेड। ठीक है भव्या। सो भाई सब भव्या को ऑल द बेस्ट बोले, भव्या को अपनी ड्रीम कंपनी मिलनी चाहिए। लेट्स पास ऑन गुड विशेस। एंड भाई भव्या अगर सेलेक्ट होएगा तो कल को जो हमारे जूनियर्स हैं भाई उनको भी रेकमेंड करना है भव्या, है ना, रेफर करना है आगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट भव्या। यस, ही डिड वंडरफुल। मेरे पास कोई मतलब एज सच फीडबैक नहीं है भव्या। आई थिंक आपने सारे जो पॉइंट्स हमने आईपीएम में डिस्कस करे थे, आपने सारे पॉइंट्स कवर करे एंड यू डिड नॉट डिसअपॉइंट मी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू भव्या, गुड जॉब। चले आगे, कोई कुछ पूछना चाहेगा? सो वी हैव भव्या, हैंड लोअर कर दो एक तो। अच्छा, कुछ पूछना है भव्या? प्लीज गो अहेड। Ma'am, so talking about the confidence, the major thing which was we were given an assignment of sharing our video resume. So I think the major confidence came from that. My introduction was also prepared from that only. It took me about 2 hours to make that resume, and I think that really worked out for me here. Yeah, so for those who are not getting the context, तो हमने लाइव बैच अभी जो करा था हमारा इंटरव्यू एंड प्लेसमेंट मास्टर क्लास का, उसमें हमने सबको एक एक्टिविटी दिया था दैट यू हैव टू रिकॉर्ड एन इंट्रोडक्शन। आपको अपना वीडियो रेज्यूमे प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए हमने एक बेस लेवल पे स्क्रिप्ट दिया हुआ था जिसके बेसिस पे आपको अपना खुद का स्क्रिप्ट लिखना था। एंड भव्या टोल्ड मी दैट ही टुक अबाउट 70 टेक्स। About 100. Oh my god, 100 takes, and I have seen Bhavya's video resume. तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है सबको दिखाऊंगी भी। भव्या नेक्स्ट वाला सेशन भी ज्वाइन करना, विल मेक एवरीवन वॉच योर वीडियो रेज्यूमे सो दैट एवरीबडी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। सो भव्या ने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोला था, लर्न करके बोला था। मैम पहले मैंने सोचा था कि लैपटॉप से देख देख के बोल दूंगा, बट फिर जब मैं बोलने लगा तो मेरा आई कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा था कैमरे लेंस के साथ। फिर मैंने सोचा पहले वॉइस रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर ऊपर से वॉइस ओवर कर दूंगा, वो भी नहीं हो पाया। तो फिर एट लास्ट करना ही पड़ा। यहाँ पर शशांक जो है, शशांक बोल रहे मैं दूसरे रूम में चले जाता हूँ क्योंकि शशांक ने जो है ऐसे ही करा था। शशांक जो है पढ़ के बोलता और वो मैंने बोला शशांक डांट लगेगी, है ना शशांक? एनी फीडबैक शशांक? वर्क किया फिर से? नहीं मैम, मेरा बर्थडे और था तो कब था? 24th of December। भाई बिलेटेड हैप्पी बर्थडे शशांक को चैट में। कितने साल के हो गए? लड़कों से तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती ना। 21।
21, स्वीट 21, स्वीट 16 होता है बट हमने स्वीट 21 बना दिया, कोई नहीं। एक अभी बर्थडे विशेस कर दो यार, लड़का अभी अभी हमारा 21 साल का हुआ है, क्या हो गया? हैप्पी Happy बर्थडे birthday, शशांक, हैप्पी Shashank. बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो न्यू ईयर की पार्टी भी तभी कर ली थी शशांक, की बची है अभी, कसर रह गई है? अरे अभी तो सिर्फ पार्टी चल रहा है और क्या। चलो बहुत बढ़िया। तो टाइम क्या हो गया है? चलो अभी हम एक इंटरव्यू और लेते हैं, ठीक है? आर्यन है और राहुल है। राहुल, क्या आर्यन को मौका दें या राहुल को मौका दें, बताओ। राहुल जाना है? अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ बोलो आर्यन, बोलो बोलो। Sorry, ma'am. I am here to interfere in your like whatever this session No is worries. conducted for. So the purpose is not to practice the live mock interview with you. Although it's not like that, I'm perfect in this. So I texted you yesterday on Telegram for I Okay. want my this CV to be reviewed. Okay. So, but I don't know whether the message was delivered to you or not. So this was your Telegram ID was sent from I got it from Gaurav. Think Okay, English. okay. I'll reply. Send me your resume, I'll reply. Okay. So I was here just in case you can see now, or should I send you on Telegram? This session is specifically for mock interview, ठीक है? तो मैं Sorry to आपको interrupt, ma'am. नो If नो the- वरीज, नो वरीज, इट्स फाइन। हम यार हम इसीलिए इसीलिए बैठे हैं हम लोग, आपकी सुने, आपके डाउट्स रिजॉल्व करें, ठीक है? Okay. And I'm पर्सनल one लाइफ thing तो more. है नहीं हमारा। आई एम जस्ट किडिंग, बट या But सेंड इट टू मी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। और जो है मुझे भी शायद एक दो और देख रहे होंगे कि हमारा तो रिप्लाई आया नहीं है रिज्यूमे का। हाँ भाई, कोई और किसी और की भी नाराजगी है, कुछ गिले शिकवे हैं, तो अभी कर लो भाई, सबके सामने ही बात कर लो। should I send it on your the Gmail या ID of सेंड इट टू मी ऑन टेलीग्राम, आई विल रिप्लाई देयर, डोंट वरी। Okay, Telegram. Yeah, that's One fine. thing more. Hmm. So before this, even I thought of joining the interview masterclass, which was held in around about 20th December, right? Yeah. So, but the thing was that my audit masterclass validity was over. So I was on like the peak, around about 3-4 lectures were left. So then I contacted Neeraj sir and all. So for extension, it took 3-4 days more to get the validity extended. So like till that I couldn't attend the live interview that sessions. So now I thought of purchasing them as recorded. So but now is there any benefit of purchasing them in recorded form? Because the like the purpose is for one face-to-face interactions and live mock interviews. So should I purchase them? Although I'm That's a valid 90% question. That's a very valid question, Arya. First, Aryan, first of all, thanks for asking this question. So let me first tell you कि उस course में हमने cover क्या क्या करवाया है, so that okay. आपको पता चल जाए कि आप whether do you really need the course or not. So we have talked about resume writing, how to make a powerful resume, right? What all pointers you need to keep in mind while making your resume, and then we've given resources of sample resume of different profiles. So if you want to get into Stat Audit, we have a sample resume for that. If you want to get into GST, we have a sample resume for that. So you will get all these resources. Then we've talked about GD. This is especially for, I mean, अब articleship level पे जो है usually interviews online ही हो रहे हैं, तो GD अब उतना important नहीं है, but campus में आप जाते हो तो GD होता है, ठीक है? Okay. So that is, I mean, group discussion, I look at it not just कि ठीक है group discussion, I also look at it as a way to improve your communication skills, because there you're getting to interact with a lot of people, speak with confidence, put out your technical points out there. So Yes, you get to develop Agree. your logical skills as well as your communication skills through group discussion. So I look at it from that point of view. Agree. Then we've talked about personal interview. We've not just told कि भाई आपको किस तरीके से कैसे क्या क्या कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से आपको आंसर करना है. We've also given you an interview cheat sheet wherein you'll see what standard answers are acceptable. ठीक है? हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, but definitely you can find a base, and then on the basis of that you can develop your own story, you can develop your own answers. We've talked about specifically talked about a LinkedIn session, how to optimize your LinkedIn profile so that you can get discovered by recruiters, and how to maintain your profile in a way that whenever a recruiter is coming and visiting your profile, they're actually impressed, they get to see what all experience you are carrying. Then we've all these sessions, मतलब जो live का मजा ये था कि हमने इन सब के
सबको लेकर जो है प्रैक्टिस करा, वेरिन यू कुड हैव आल्सो गॉटन अ चांस टू पार्टिसिपेट, राइट? चाहे वो मॉक इंटरव्यू था, चाहे वो रिज्यूमे था, वीडियो रिज्यूमे था, चाहे वो आपका ग्रुप डिस्कशन था, या फिर पर्सनल इंटरव्यू था, लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू करना हो गया. बट वी कीप कंडक्टिंग दीज लाइव सेशंस ऑन वीकली बेसिस. अभी काफी टाइम से जो है हो नहीं रहे थे हमारे सेशंस बिकॉज ऑफ वन और द अदर रीजन, बट फाइनली वी स्टार्टेड अगेन एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट. सो अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन लेना है तो आप ले सकते हो, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि किस किस चीजों कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है. एंड एज फार एज Still available on Thinking participation, Brits. So that's the reason I asked, is it beneficial to purchase the recorded classes of this course? Because I'll be starting in another 2 days, because I'm left with my around about 1-2 lectures of that audit masterclass. So only I'll be left with is the test, which we have to give to get the certificate. So yeah, then you I'll can be definitely go ahead and purchase the course. रीजन उसका ये है कि आपको अपने, चाहे वो इंटरव्यू प्रिपरेशन है, चाहे आपको रिज्यूमे राइटिंग है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन सब का आपको गाइडेंस मिलेगा. सो इफ you'll be appearing for articleship like interviews. Yes, my group 2 result is awaited. So thinking that it comes out to be positive, so then I'll be going for interviews. Before that, I want my CV to be reviewed, although I've watched your YouTube sessions before preparing my CV. So that was very helpful, but I still want a bit of confusion on some achievements points of something, like, No worries. because it's my first time. No worries, no worries. Aryan, definitely I'll give you feedback. आप टेंशन मत लो, हम टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहते हैं. एंड एज फार एज कोर्स इज कंसर्न, यू कैन गो अहेड. नहीं तो हमारे लाइव सेशंस जो हम ये कंडक्ट करते ही रहेंगे, इनमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. तो whatever works for you, go ahead with that. मतलब keep working on your technical skills as well as communication skills. And Would you be are quite coming live confident. in those sessions? हाँ Would जी. you be coming live in those sessions? Like if I purchase the So recorded. I come live here. हमारा जो career guidance वाला group है, and that link is sent to all the members. तो जो भी है वो सबको जाएगा ही. So since you are like, you're also part of career guidance group only, तभी आपको link आया होगा, right? So you can definitely join. So we usually do these live sessions in our career guidance course. Okay. Therein we do practice, resume का भी करते हैं, mock interview, LinkedIn, group discussion. We do all these live sessions. Thank you, ma'am. Could you please confirm your Telegram ID, because there's just a single text. So I've already sent, not the PDF, but I've asked first whether you will be taking it on Telegram or not. Just a second. Let me see if okay. Yeah, I have received your text. मैंने आपको reply कर दिया. Send me your resume. ठीक है, मुझे receive हो गया आपका. Thank you so much, ma'am. हाँ. And I'll at times, come next time for the live mock interview. For sure. I'll prepare from the course. हाँ जी. All the best. Okay. Okay. कभी कभी जो है मैं अनरिस्पॉन्सिव हो जाती हूँ, तो जो है उसके लिए एडवांस में माफी. बहुत पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मुझ पे. ठीक है, और बहुत काम है, तो इसीलिए कभी कभार जो है हो जाता है. Ma'am, by what name can we find you on Telegram? It's I, Pooja Sharma. Just type that in the search box of Telegram and you can message me there. ठीक है, Telegram थोड़ा ज्यादा better है for faster communication. ठीक है, so although I take 24 to 48 hours to reply. राहुल तो जो है गायब हो गया. राहुल? Yes, ma'am. I am here, ma'am. तो वीडियो तो ऑन करिए. चलिए मॉक इंटरव्यू शुरू करते हैं. Ma'am, maybe I will face network. Why my video is off, ma'am? Let's see, ma'am. Ma'am, here is a network issue. अच्छा. So if I will switch on my video, but ma'am, let's see, ma'am. It or not. तो कोई बात नहीं, फिर राहुल आप वीडियो ऑफ रखो, क्योंकि अगर मुझे आंसर प्रॉपर्ली सुना ही नहीं तो मैं फीडबैक नहीं दे पाऊंगी. ओके मैम. ओके. ठीक है, हाँ, वीडियो ऑफ रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो हमारे साथ है राहुल. राहुल सिंह बुलाऊं, राहुल कुमार सिंह बुलाऊं, राहुल रैन बुलाऊं, क्या बुलाऊं? Yeah, ma'am. Whatever you want, ma'am. चलो ठीक है, राहुल रैन बुलाते हैं. सो राहुल रैन, कौन सी कंपनी में जाना चाहेंगे आप? मैम PwC, मैम. PwC की फुल फॉर्म बताओ. Yes, ma'am. PricewaterhouseCoopers, ma'am. I think it's very easy. That's why I told you, ma'am, PwC. ये क्या बोलते हैं ना कि ये बढ़िया था गुरु, मिर्जापुर का डायलॉग है ना. चलो, कौन सी प्रोफाइल में जाना चाहेंगे आप? मैम स्टैट ऑडिटर. स्टैट ऑडिट के दीवाने हैं सब. चलो, बहुत बढ़िया. So let's start. Good evening, Rahul. How are you doing today?
I'm doing fine, ma'am. Please tell me something about yourself. Okay, ma'am. First of all, ma'am, thank you, ma'am. Thank you for giving me an opportunity to introduce myself in front of such a nice panel of PwC. As I am Rahul Kumar Singh, I am from Muzaffarpur, which is placed near Patna in Bihar. I have completed my schooling from CBSE board, one of the reputed CBSE school, Jawahar Navodaya Vidyalaya, which is central government school. I scored 9.2 CGPA in class 10, 81% in class 12. After that, I completed my graduation from Delhi University. And if I talk about my extracurricular activity, then ma'am, I had participated in national level bit. I am a national player at cricket, and I have also participated in regional level meet of Kho. So I have also awarded as a regional player of Kho and national player of cricket. And then, apart from this, if I talk about my professional experience, that I am a chartered accountant, and I have completed my articleship from Saket Modi and Company, one of the most reputed and renowned CA firm in Patna, well known for state audit, bank audit, and taxation. In initial days of taxation, I mainly work in all areas like taxation, auditing, and bank audit for build my base. But in third year of my articles, I got a chance to do a state audit of five-star hotel, which name is Lemon Tree, ma'am. That's it from my introduction side, ma'am. You have quite an extensive experience in stat audit, I believe. Yeah, ma'am. In third year, mainly I have done so much work in a state audit. Right. So why do you want to work with PwC? Ma'am, because ma'am, PwC is one of the CA firm in Big Four, ma'am, and every CA fresher used to dream to work for Big Four, ma'am, and me too. That's why, ma'am, I am here, and ma'am, I want to, ma'am, build my skill and sharpen my skill with Big Four, and want to add value to PwC too at the same time. That's why, ma'am, I am here. So could you tell me a little more about assertions in audit? Yeah, ma'am. Ma'am, if I talk about assertion, ma'am, that assertion are, ma'am, completeness, presentation and disclosure, right and obligation, existence, and accuracy, ma'am. Could you please elaborate on completeness? Okay, ma'am. Ma'am, completeness is regarding, ma'am, if you are checking any transaction or any account balances, then, ma'am, it need to be supported by document 2, and ma'am, from document and right now, ma'am, I am not getting it, but I will check it, ma'am. Okay. Have you worked on MS Excel? Yeah, ma'am. What all other softwares have you worked on during your articleship? Ma'am, I have also done a concurrent audit of bank where I worked on CBS, core banking software, and during audit of Lemon Tree, I have worked on Ellipse software and Protist, which is customized software used by Lemon Tree, ma'am. Could you tell me the difference between count A, and count blank? Yeah, ma'am. Count A. Not, ma'am. Not right now, ma'am. Okay. Could you tell me the application of VLOOKUP formula? Yeah, ma'am. Whenever we find so much data, and we need to cross check that. Let's take example, ma'am. We have 2 seats, and in both seats, ma'am, same data are given, ma'am, and we have to check that, ma'am, whether the data in the master sheet is reflected in second sheet or not. Then we use VLOOKUP formula to check that, ma'am, whether the all data are, ma'am, reflecting in the another sheet or not. Right. What's the shortcut for creating a filter in the sheet, in the worksheet? Control Shift plus L, ma'am. Control plus Shift plus L. That's correct. Right. So why should we hire you, Rahul?
Ma'am, if I talk about my ma'am, why should you hire me, ma'am? Ma'am, I am a very ambitious type of person. At initial stage, ma'am, my dream was not to pursue CA. I want to play cricket for India at international level. I already told you that I have played national level cricket, ma'am. But due to some personal reason, and my father in class 11th and 12th, after passing 10th, my father don't want to send me another state only to play cricket. At that time my senior told me that Rahul, took commerce so that na you can make balance in dream in your cricket and your study too, because commerce is easier than comparatively easier than science. That's why I choose commerce. But due to some personal reason I didn't able to play cricket. Then my teachers used to tell me that CA is very one of the toughest course in India. And at that time I find one of the famous cricketer Rahul Dravid quote that he also want to pursue CA, but after reading the syllabus of CA, he find that cricket is much easier than CA, ma'am. That motivates me a lot, ma'am, to do CA, ma'am. So I always used to took, ma'am, everything as a challenge. That's why, ma'am, I am here because I was a very sport freak guy, ma'am. But, ma'am, I took C as a challenge, and today I am a chartered accountant, ma'am, and I am here in front of you, ma'am. So, ma'am, that's my quality. And I have also lead a team, ma'am, during my articleship of 4 member, ma'am. As earlier said you that I have done articleship of lemon tree, ma'am. So I have leadership skill too, ma'am. Uh, that's why you can, ma'am, hire me, ma'am. Rahul, where do you see yourself 5 years down the line? Ma'am, 5 year down the line, ma'am, is very big period. I always used to, ma'am, judge myself yesterday where I was and right now where I am, ma'am. But if I am be specific, then, ma'am, I want to improve my technical skills. Like I want to pursue Python, financial modeling too, because I want to in later stage I want to go in a finance area too after stat audit, because, ma'am. And secondly, ma'am, if I talk about, ma'am, that I want to sharpen my skill in your organization, so that ma'am, after 2 or 3 years, if I would get a chance to lead a team, ma'am, I will satisfy you that, yeah, ma'am, I can lead the juniors, and so that, ma'am, that's what, ma'am, right now I want, ma'am. So you're saying that you will be switching careers because Python is more into the data analytics field. Ma'am, not right now, ma'am. As in Big Four, ma'am, there is another department, FDD. So, ma'am, not right now, ma'am. But after 2 3 years, yeah, ma'am, I can switch. If I will get a chance, ma'am, then I will definitely switch toward FDD, ma'am. But for initial 2 3 years, I'm damn sure that I'm only doing stat audit, ma'am. But yeah, So after why 2 don't 3 you years, apply for FDD directly? Why you already have 3 years of work experience? Why don't you directly apply to FDD? because right now I'm very much interested in domain stat, ma'am. Because now I have worked in every area like taxation, stat, and so on, ma'am. Like indirect taxation too. But, ma'am, stat audit is something which excites me, ma'am. And the stardom, ma'am, we get from like of auditor, ma'am, that motivates me to, ma'am, do mainly in work in a stat domain, ma'am. So right now, ma'am, I am only planning to see myself in domain of stat. But, ma'am, after later on, I'm also thinking of pursuing CFA. Not right now, but yeah, after 1 or 2 years. After then, maybe, ma'am, I will switch toward FDD department in your organization only, ma'am. All right. Tell me about one weakness that you've overcome in the past. Yeah, ma'am. I had one weakness of hesitation, ma'am. I used to hesitate a lot with interacting with new people, ma'am. But at the same time, ma'am, when I comes into my comfort zone, then my interpersonal skills play a very important role to make a very good relationship with that person, ma'am. So, ma'am, yeah, you can say, ma'am, that hesitation is one of my weaknesses. Would you still call it your weakness, though? No, ma'am, but yeah, ma'am, but after, ma'am, talking with that person or after spending some time, ma'am, as I am very interpersonal person, ma'am, then, ma'am, then my relation with that person gets very strong, ma'am. So Will you manage to talk to our clients for the first time then if you have this difficulty of interacting with new people?
How will you interact with our clients? Ma'am, yeah, ma'am. While interacting with client, ma'am, mainly we used to show our professional behavior, ma'am. So during professional behavior, when you showcase your professional behavior, you don't need to be so informal, ma'am. So yeah, if you talk about formal talk, yeah, I am very professional. So I don't find any difficulty to talk with clients, ma'am, mainly. But you can say na, like I have a ma'am stage fear while to speak na in front of 10 to 12, 15 people, ma'am. There I find some difficulties. But yeah, ma'am, I after ma'am get together with them, I will able to I can able to manage myself, ma'am. So let's just say we have our client L&T, for example, and we're conducting an audit. And Okay, ma'am. you're given this assignment of presenting the key points in front of the management and the panel is of 20 members. How will you present it if you don't have the confidence? If you have stage fright, then how will you present the numbers correctly? And how will you present and how will you convince the management on that particular, for a particular point, let's say? Ma'am, as of now, ma'am, I think that, ma'am, you will send me in a team, and maybe I will not get a chance to, ma'am, to lead the team. But yeah, if I will get, ma'am, then, ma'am, ma'am, I will overcome that, and I will make sure that, ma'am, I am confident enough to interact and show to show what you want, ma'am, from my side, and what the L&T want from my side to interact with them, ma'am. Right now I am also working on it, ma'am, because, ma'am, stage fear is something, ma'am, which you feel at initial stage. After interaction of 2 or 3 minutes, ma'am, when you get familiar, then, ma'am, it's like, ma'am, normal, ma'am. So, ma'am, yeah, I can manage that, ma'am, too. All right. That's all from my side, Rahul. Thank you so much for your time. Do you have any questions for me? Yeah, ma'am. I have one question, ma'am, and thank you for asking, ma'am. Ma'am, I want to know my growth perspective in state domain, ma'am, in PwC. As I told you that, ma'am, can I switch, ma'am, after 2 or 3 years toward FDD department or not? After 2 or 3 years, in your organization only. So switching option definitely is there, but I mean, I wouldn't appreciate it if I'm taking you in my team. I would rather invest in a person who's going to stick with me for a longer duration, because I personally believe in building long-term relationships. So that can be a problem here. And as far as growth prospects are concerned, depending on how you deliver, how you manage projects, how well you meet deadlines, and how well you perform, so your growth will be directly proportional to that. And yeah, after 3 years of experience, you can be promoted to the managerial level. Ma'am, as I heard about now that, ma'am, for CFO level, yeah, you need to be a knowledge for 2 or 3 domain, not only of state domain, ma'am. That's why, ma'am, I want to switch my career from one domain to another domain in one organization only, not other organization, ma'am. Because for CFO level, you need to understanding of, ma'am, 2, 3 departments. That's why, ma'am, I am thinking right now for switching. Otherwise, ma'am, I am very comfortable with state domain only. Okay. All right. We'll look into it, Rahul. Thank you so much. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much. जी काफी ग्रिल कर दिया क्या मैंने राहुल को भाई? सब टेंशन का माहौल आ गया कि यार वहाँ पे हेजिटेशन वाले में तो मैम भाई साहब वो मैम बस ठीक था मैम, बढ़िया था मैम। भाई सब लोग अनम्यूट करके बताएं और किस किस को लग गया डर लग गया भाई, और किस किस को रोस्टेड? नहीं रोस्ट नहीं, मैं बस टेस्ट कर रही थी राहुल को कि कहीं तो ये अटकेगा, तो मैं जो है आई जस्ट वांटेड हिम कि उसको खुद रियलाइज हो जाए कि कहाँ पर जो है वो मिस्टेक कर रहा है बोलने में, तो मेरा गोल वो था। मैम मेरे को लगा मैम वहाँ पे जो मेडिटेशन वाला जो बोला कि स्टेज फियर वाला, मैं थोड़ा सा मैं फंस गया था मैम, अपने को फील हुआ कि मैं क्या बोलूं। कोई नहीं। सो पहले भाई राहुल की तालियां कहाँ हैं गाइस? ही परफॉर्म सो वेल, इतना कॉन्फिडेंटली बोले राहुल, तालियां बजनी चाहिए भाई। कम ऑन, यूट्यूब कहाँ है आप भाई? सोना थोड़ी ना था हमें। इतना बढ़िया राहुल ने इंटरव्यू दिया है, इतने बढ़िया इंसाइट दिए हैं, इतना जो है मतलब
राहुल को मेंटल प्रेशर अभी फील हुआ है कि भाई एकदम ऐसे स्ट्रेस पूछो मत, इंटरव्यू हो मैं- गया ये तो। ठंड है यहाँ पे, मेरे को पसीना हो गया मैम, बाय गॉड। चलो, मेरा गोल वो नहीं था, बट आई वांटेड टू पुट यू इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन राहुल, ताकि क्योंकि आप ये सब क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ग्रेटफुल फॉर यू मैम, बिल्कुल एग्जैक्टली मैम। चलो, कंगना बोल रही है तो पॉपकॉर्न लेके बैठने वाला इंटरव्यू था। सर्दियों में तो गरम गरम पॉपकॉर्न लगेंगे भी बढ़िया। चलो मैम फीडबैक जरूर देना मैम, कहाँ कहाँ पे। हाँ, बस अभी आपके फीडबैक पे ही आ रहे हैं राहुल। सो राहुल, पहली बात तो बहुत कॉन्फिडेंटली आपने बात किया, ठीक है। स्पेशली आपका इंट्रोडक्शन, बहुत कॉन्फिडेंस आपने वहां पे रिफ्लेक्ट किया। वर्ल्ड कप देखे तूने? हाँ हर्षल, हमने देखे हैं। हर्षल ने तुरंत माइक म्यूट कर लिया कि अब मेरे को रोस्ट ना कर दे मैम कहीं। बट कोई नहीं। सो अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ सो दैट। सो राहुल, बहुत अच्छे से आपने अपने क्वेश्चंस को टैकल करा। कहीं मुझे ये लगा नहीं कि आप घबरा रहे हो, बट डेफिनेटली कुछ कुछ आंसर्स में इंप्रूवमेंट होना है, और वो बिल्कुल मेक श्योर करना है कि बिफोर गिविंग योर फर्स्ट इंटरव्यू आप अपने आंसर्स को मॉडिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक दैट आई एम गोइंग टू गिव, ठीक है। ओके मैम, डेफिनेटली। इंट्रोडक्शन में कोई कमी नहीं था, इंट्रोडक्शन आपका बढ़िया था। एक छोटा सा मॉडिफिकेशन आप जो कर सकते हैं, आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा पहले बोले, ठीक है। आप अपना वर्क एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा पहले ऊपर बोले, लाइक मैं रिसेंटली क्वालिफाइड हूँ एंड इन माय 3 years of articleship I worked on all these things. So we do not mention clients, we mention industry, but we never mention clients, ठीक है। ओके। चाहे कोई कितना ही बड़ा, चाहे आपने मतलब कितने ही बड़े क्लाइंट का क्यों ना काम करा हो, we refrain from mentioning clients because वो confidentiality clause होता है between the audit engagement partner and the client, so we cannot breach that, ठीक है। one thing, तो लेमन ट्री, और मुझे ये लगा कि आपने ना मतलब 3-4 बार तो लेमन ट्री पर कैपिटलाइज करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री के बारे में आप मेंशन कर सकते हो दैट आई हैव वर्कड इन सो मेनी सो एंड सो इंडस्ट्री, which makes me have a wider knowledge of all these different industries, ठीक है। क्वालिफाइड सीए, ठीक है। वो स्टार्ट ऑडिट, हाँ, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में ना आपके पास मौका था वहां पर ये बताने का। आपने मतलब मेरे को जो प्रोमिनेंटली सुनाई दिया, स्टार्ट ऑडिट था, बैंक ऑडिट था। यू कुड हैव टॉक्ड अ लिटिल मोर अबाउट other assignments also Like that you may have taken. taxation मैम, टैक्स ऑडिट, टैक्सेशन, टैक्स ऑडिट, जीएसटी। हाँ, तो वो सारी चीजें जो आप मेंशन कर सकते थे। थोड़ा सा और एक्सपैंड करो अपने वर्क एक्सपीरियंस पे, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस ही ना मतलब एक क्वालिफाइड सीए का ही जो है, जैसे वो कहते हैं ना कि एक क्या बोलते हैं, एक चुटकी सिंदूर ही जो है तुम क्या जानो उसकी कीमत, राइट। तो वो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है आपका, एक वर्क एक्सपीरियंस ही जो है आपका सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है, ठीक है। देन assertions by technical knowledge, स्टार्ट ऑडिट ऑडिट मास्टर क्लास के स्टूडेंट हैं आप राहुल? अभी लिया मैम, आज लिया परचेज है। किया है मैम, आज ही परचेज चलो, किया कोई है नहीं। मैम। कोई नहीं, तो फिर यहाँ पर अभी मैं ज्यादा डांट नहीं लगाऊंगी, ठीक है, वरना मैं बुला लेती अर्चित को अभी कि अर्चित देखो। ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, वाई शुड बी हायर यू, ये वाला अच्छा लगा मुझे आंसर आपका, आपने राहुल द्रविड़ का जो है पिक करा, बट मुझे स्टोरी में ना उतना दम नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। वहां पर आप ये आपका अच्छा लगा, दैट यू आर वेरी एम्बिशियस। 2 चीजें मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी। जिस तरीके से आप बात करते हो ना, आप बीच बीच में ना यूज कर लेते हो, वो क्या है ना, मैम है ना, ऐसे, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिकली इसको पॉइंट आउट कर रही हूँ, वो विद प्रैक्टिस आपका चला जाएगा, तो उसमें घबराने वाली चीज नहीं है। बस मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका अटेंशन जाए। अब एक काम करना है राहुल आपको, आफ्टर वी एंड दिस सेशन, आप अपने वाला पोर्शन जो इंटरव्यू वाला पोर्शन है उसको दोबारा से देखना, ठीक है। उसको दोबारा से देखना और अपना खुद एक बार नोट करना कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो आप डांटना मैम ना ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो बस उसको मैं अलग से पॉइंट आउट कर रही हूँ, उसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। ब्लंडर जो मुझे लगा इंटरव्यू में राहुल, वो यही था कि मैं स्विच करना चाहता हूँ, और लास्ट में आपने मुझसे पूछ भी लिया, ठीक है। चाहे आपको करना है स्विच, ठीक है, आपको क्लैरिटी है कि आपको करना है स्विच, राइट। यू डोंट नीड टू टेल इट टू द इंटरव्यूअर, और स्पेसिफिकली मतलब वो इंटरव्यूअर जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है कि मुझे इसको अपनी टीम में रखना है कि नहीं रखना। सेकेंड लेवल ऑफ इंटरव्यू जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है, जिस डायरेक्टर के साथ आपका इंटरव्यू हो रहा होता है, आप उसी की ही टीम में जाते हैं मोर ऑफन देन नॉट, ठीक है। तो मैं बताऊं ना, मैं क्यों रखूंगी किसी ऐसे इंसान को जो मुझे पता है कि 1 साल के बाद एफडीडी की प्रोफाइल में चला जाएगा, मैं क्यों रखूंगी, राइट। सो नेवर मेंशन अबाउट योर कि मुझे जो है मुझे बाहर सेटल होना है। आप तो बोलो भाई स्टार्ट ऑडिट मेरी जान है, मैंने अपना
जीवन इसी में बिताना है, मैंने इसमें जो है लाइफ टाइम मैंने बुढ़ा होना है यार स्टैट ऑडिट करते करते, ऐसा ऐसा जो है हमें बताना है, ठीक है। और हमें ये बताना है कि भाई आई वांट टू ग्रो इन दिस प्रोफाइल एंड आई वांट टू सीक, मैं अपनी एफिशिएंसी डेवलप करना चाहता हूँ, आई वांट टू लीड टीम इन द फ्यूचर एंड आई डेफिनेटली वुड लाइक टू बी वन ऑफ द कोर मेंबर्स ऑफ द टीम, ठीक है, और ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड मूव अप द हायरार्किकल लैडर। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जो चीट शीट दी हुई है उसमें से उसको मेंशन करो, उसमें देखो कैसे अपना आंसर करना, और ये वाला आंसर स्पेसिफिकली राहुल दोबारा से लिखो, इसको दोबारा से इसका स्क्रिप्ट लिखो, दोबारा से इसको लर्न करके इसको परफॉर्म करो, ठीक है। ओके मैम। हाँ, 5 years डाउन द लाइन वाला उसको चेंज करो। वीकनेस अगेन, तो वीकनेस में ना क्या हुआ कि मैंने आपसे पूछा था टेल मी अबाउट वन वीकनेस दैट यू ओवरकम रिसेंटली, तो पहले आपने बता दिया कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल मैंने ओवरकम, फिर मैंने पूछा दोबारा से, मैंने कहा अच्छा अभी भी इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर आप वहां पर फंस गए। पहली बार आपने सही आंसर दे दिया बट दूसरी जगह पर आप फंस गए, वो बोलते नहीं यहाँ मैं फिसल गया तो वहां फंस गए। तो क्या मतलब मैं पूछना यही चाह रही थी कि मैम अगर आप अपनी अगर वीकनेस मान लो के मैम बारे आप ऐसे बोल देते हो और फिर पूछा जाता है, जैसे आपने एक मेरे को केस दे दिया कि एलएनटी के सामने आपको प्रेजेंट करना है मैम, वहां पे फिर मैं कैसे मैम क्या बोलूंगा मैम, मेरे को थोड़ा आप बता सकते हो मैम, अगर ऐसा हाँ सिचुएशन आ जाता है मैम, हाँ, फिर मैम व्हाट टू तो से एट दैट देखो टाइम मैम। सीन ये है, मैंने पूछा था कि कम ओवरकम करना है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि या तो अपनी वीकनेसेस को आप इस तरीके से बताओगे वो वीकनेस लगे ही ना, ठीक है, या फिर अगर आपने एक बड़ी रियलिस्टिक वीकनेस बताई थी अपनी कि मेरे को कम्युनिकेशन मतलब स्टेज फ्राइट है मेरे को, ठीक है, और ये बड़ी या मैम जेन्युइन प्रॉब्लम है और होगी भी शायद से, बट आप बोल सकते हो थे यहाँ पर कि आई यूज्ड टू हैव स्टेज फ्राइट एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट, आई ट्राई टू टॉक टू न्यू पीपल सो दैट आप यहाँ पर एक डायलॉग डाल सकते थे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। Obviously I do not aim for perfection, but I do believe practice can definitely help me in overcoming the nervousness of talking to new people and presenting in front of a larger audience, ठीक है। And for that I am also trying to participate in ICI events wherein I get to talk to new people and get exposure of public speaking. At the same time I recently participated in a workshop where I got to interact with 100 other people, and I tried to communicate, and I also got a chance to lead one of the group activity wherein and we were the runner up for that activity, or we stood first in that activity, something like that. And then other than that I'm also taking participate in Toastmasters, or I've started going to this public forum wherein I get to present myself, and we do these activities, extempore or public speaking or speech writing or speech delivery practices, which have helped me in improving overall my communication skills. तो ऐसे ऐसे करके एक आंसर फ्रेम कर सकते हो। एंड अब आप बोलोगे मैम मैं तो ये कर ही नहीं रहा हूँ, तो करना शुरू करिए धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि आपको ये उनको प्रूफ देना है कि मैं काम कर रहा हूँ अपनी वीकनेस पे। और मैंने तो क्या है, मैंने आपको इतना सारा कंटेंट दिया, आपको सारा बोलने की जरूरत नहीं है, आप 2-4 एक्टिविटीज भी बताओगे, that will show that you have taken the initiative to work upon your weaknesses. ओके मैम, थैंक यू, वेरी नाइस सजेशन मैम। हाँ हाँ हाँ, सजेशंस में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट वाला पॉइंट ठीक था, बट वो स्विच वाला पॉइंट अगेन उसको अवॉइड करना है, वो नहीं मेंशन करना। ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है, मतलब मैम इंटरव्यू में नहीं दिखाना है एग्जैक्टली भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो मूवी देखी है इंटरस्टेलर, किसने देखी है सीरियस मैम, कहाँ मूवी देखते हैं हम लोग, आप हमसे ये नाम पूछो सुना कि है नई मैम, बट अमेंडमेंट्स कौन सी आई हैं टैक्स में हाँ, तो बेसिकली मैं बताती हूँ इंटरस्टेलर मूवी, पॉपकॉर्न देखिए, हाँ चलो शशांक ने देखी, शशांक रिलेट कर पाएगा। उसमें रोबोट होता है टार्स करके, याद है शशांक, टार्स करके रोबो होता है। तो बेसिकली ह्यूमंस ना मतलब उनको स्पेस में जाना होता है, तो वो अपना रोबो डेवलप करते हैं। तो उसमें ना वो बेसिकली इंटेलिजेंट रोबो होता है, लाइक इट कम्युनिकेट्स विद यू एंड इट्स वेरी इंटेलिजेंट। तो उसमें ऑनेस्टी भी डालते हैं, लाइक हाउ कितना % ऑनेस्टी होता है। तो वो बोलते हैं कि उसमें 85% ऑनेस्टी होता है उसमें, मतलब 100% ऑनेस्टी तो रोबो के अंदर भी हमने फीड नहीं किया है, ठीक है। तो 100% ऑनेस्टी आपको एक्सेप्ट अपने फैमिली मेंबर्स या फिर अपने अपने सिग्निफिकेंट अदर के साथ रखनी है, अदरवाइज भाई डिप्लोमेसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो इतनी वैसे पॉलिटिक्स होती है, तो डोंट बी 100% ऑनेस्ट देयर। अपना जितना आपका मतलब उस पर आपको ये मेक श्योर करना है ना राहुल, कि मुझे ये जॉब इंटरव्यू क्लियर करना है,
तो उनको वही दो ना जो उनको सुनना है। क्यों हमें अपनी ऑनेस्टी दिखाकर हमें बताना है भाई हम तो बड़े सच्चे इंसान हैं। दे वांट टू लिसन दीज काइंड ऑफ आंसर्स ओनली, राइट? ठीक है, so that was all for your feedback। और थोड़ी सी प्रैक्टिस और लगेगी राहुल, एकदम बढ़िया हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आपका ए लेवल है, तो Will do that, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. अरे ऑल द Very बेस्ट, grateful. एंड डेफिनेटली जो है बिग 4 में पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। बस थोड़ी और प्रैक्टिस करिए और बस अपना स्पीकिंग जो डिलीवरी है थोड़ी और पॉलिश करो। डेली बेसिस पर जो है अपने ये आंसर्स को प्रैक्टिस करा करो, उनकी डिलीवरी पे भी प्रैक्टिस करा करो। ठीक है, रिज्यूमे Okay, बन ma'am. गया राहुल जी Definitely आपका? will. Yeah, ma'am. I have also shared my resume, but I हाँ didn't हाँ get हाँ, any feedback. बस उतना ही सुनना था। ठीक है, Okay. वो वाला पार्ट नहीं सुनना कि मैम फीडबैक नहीं आया है। आ जाएगा, डोंट वरी, कल तक आ जाएगा फीडबैक। शिरीन जो है, शिरीन लाइव है हमारे पास। शिरीन जो है अभी करेगी हमारे फीडबैक के साथ काम करेगी, फीडबैक के ऊपर सबके। तो चलिए भाई, सेशन 10:30 बजा दिए आप लोगों ने। हमेशा सोचती हूँ 1 घंटे का करूंगी, 1 घंटे का 1.5 घंटा कब हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। ठीक है शशांक, नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करके आना, नेक्स्ट टाइम मैंने लेना है आपका। अनम्यूट करूं? हाँ मैम मैं वही बोलने वाला था, अभी से नंबर लिख लीजिए नेक्स्ट टाइम। हाँ, नेक्स्ट टाइम पक्का फर्स्ट तुम्हारा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मॉक इंटरव्यू करेंगे अपन। और भाई किसी को कुछ कहना है तो अनम्यूट कर अपने आप को कह सकते हैं। हाँ जी ज्योतिका। मैम मेरा भी रिव्यू कर दो ना। रेज्यूमे पक्का हाँ, कल रिप्लाई आ जाएगा। हाँ। और मैम नेक्स्ट टाइम कब हो रहा है ये हमारा वापस से? वीकली ही करते हैं। देखो अभी हमने सोचा, पहले तो मैं सैटरडे करती थी, पर मेरे को शिरीन ने बोला कि 31 है, पीपल हैव लाइफ। मैम कम ऑन, आपकी लाइफ नहीं है तो क्या हुआ, जीने दो उनको। मैंने कहा चलो फ्राइडे को कर लेते हैं। मैम सीए का लाइफ नहीं होता है ना, कल 31 है। नहीं मैम है एग्जाम। मैम, हम नेपाल जा रहे हैं मैम। अरे वाह, क्या बात है। हाँ मैम शशांक। नहीं हाँ ज्योतिका। मैम नेक्स्ट वाले में मैं भी मॉक इंटरव्यू दूंगी, पक्का प्रिपेयर पक्का होके आऊंगी पूरा। और ये जैसे वो नहीं होता हॉस्पिटल में जाके पर्ची कटवा लेते हैं, नंबर लिख लो भैया, पहले से अपॉइंटमेंट ले लेते। वही हो रहा है यहाँ पर। मैम पर्ची काट लो, पहले हम देंगे। चलो हाँ, बहुत बढ़िया। शशांक के बाद मेरा ले लेना मैम। हाँ डन। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइव सेशन में मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आया आज, थोड़ा ना ऐसे ही बड़ा फैमिली इमरजेंसी हो गई थी, बट आफ्टर लाइव सेशन आई एम फीलिंग लाइक वेरी एनर्जेटिक। एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल हु जॉइन, एंड थैंक्स यूट्यूब, भाई आप लोग बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हो, सो थैंक यू सो मच। एंड आई होप आपको कुछ वैल्यू मिला होगा सेशन अटेंड करके। मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। Again मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, गुड नाइट। चलो जी, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। बाय बाय, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, And गुड keep नाइट doing गाइस, that मैम। गुड नाइट।